再来看印度德里的水源厅厅长，因为抗议水资源分配无公平，也有欠水的问题，即马已经绝食到第4天啊。这个德里的官方就表示讲，即马当咧改善地下水的系统，也毋过有官员煞表示讲，这款措施其实也是无通解决热人欠水的问题。 天气有够热，德里一寡上产食街区的水道头差不多拢打起啊！百姓都爱灌大细的管仔桶啊，到水车去提。这含几公里外连草啊，拢加甲真整齐高级社区，是形成真强烈的对比。水资源分配无公平，嘛是德里的水源厅长绝食抗议的主因。以及讲附近的海洋那邦大量使用河水，海洋那邦是回应讲是德里的管理有问题。आज 28 लाख दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। मेरा ये अनिश्चितकालीन अनशन तब तक जारी रहेगा。在当年的热天，几百万印度的民众拢爱面对欠水的问题。德里重要水源雅穆纳河，在可汗的热天流速百万，农场办公室和家庭用水需求量拢增加，但是供应却真有限。今年热天热应高温，和相关问题变得更加严重。连德里和红酒，则是印度的涉国的南部大城班加罗尔拢受影响。因礼拜还有百姓为着抢水起冲突，向公部门来示威。इतना सारा पाइप लग गया कहाँ से पानी आएगा बताइए तुरंत पानी खत्म हो गया एक दिन बाद टैंकर आता है यहाँ और सारे पाइप पर जल्दी चढ़ जाते हैं किसी पाइप मिला पानी मिला ही नहीं किसी को मिला किसी को नहीं मिला 新德里的非营利机构科学和环境中心水资源专案主任卡普讲，当局是一直推动真侪未规划的开发，但是对1994年以来，却毋捌审慎分配河水的资源。德里的政府表示讲，当咧计划要复苏河，含甲季节性雨季、后雨季期间，亚穆纳河溢出来的水欠起来，改善地下水的系统。不过官员讲，干那靠这措施是真歹解决热天欠水的问题。环保人士讲，极端气候袂无去，德里需要的是全面水资源管理计划，嘛袂当甲雅穆纳河当作是主要的水资源的来源。公司新闻黄文玲编译。